पिछली क्लास सर सेल्फ स्टडी की थी। ओह सेल्फ स्टडी थी, फिर तो छुट्टी हुई थी समझ। ओके गुड। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन द क्लास। कहाँ थे हम लोग पिछली क्लास में? वी आर डूइंग वीडीआर, आई सपोज, करेक्ट? इन द लास्ट क्लास वी आर डूइंग वीडीआर। यस सर। यस सर। एसवीडीआर करना था सर। हाँ, तो एसवीडीआर आगे करना है। वी वांटेड टू टॉक अबाउट the SVDR carries requirements and all that. So as of now, we have understood what is the device this VDR is. It is supposed to be recording critical information regarding operation of the ship. It records automatically and saves it in something called final recording medium. Minimum recording data available is 48 hours. Last 48 hours हमेशा रहता है। अभी से 48 घंटे पहले तक की रिकॉर्डिंग है। We have seen that it is recorded, 3 copies are recorded in 3 different places on something called float free, fixed type, and long-term recording medium. We have also seen all the components that is there in the VDR, the 6 components. The data management unit, the processor basically CPU, audio module, final recording medium, alarm module, replay station, and finally the battery, backup battery. So 6 modules are there. We have also seen the different types of data recorded by VDR. So we have 20 data recorded. VDR is a comprehensive recording system wherein it requires input from different sources, different devices or sensor equipment. We have seen that it collects data from microphones, VHF, engine, telegraph, rudder, gyro compass, echo sounder, etc., etc. Hull opening status, fire doors, dampers. All these places it collects information, keeps on storing, and it can be seen replayed back on the screen of a computer if we have the software, what we call the replay station. So VDR being a comprehensive system, it also requires that the ship is fitted with comprehensive amount of sensor equipment. माइक्रोफोन तो आ गई VDR के साथ, लेकिन हल के ओपनिंग का सेंसर कहां से आएगा? फायर डोर्स के सेंसर्स होंगी, फायर डैम्पर्स के सेंसर होंगे, और भी बहुत सारे एनीमोमीटर है, इंक्लाइनोमीटर है, इन सब के सेंसर्स होंगे. Newer ships, when they are getting built, all these sensors are already in existence, and it can be very well planned in the early stages of building the ship कि हम ये सेंसर लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगाएंगे, सारी प्लानिंग है. बट पुराने जहाजों का क्या? पुराने जहाज में ये सब सेंसर थे नहीं, इतना हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ओपन नहीं हुई थी, ना इलेक्ट्रॉनिक्स इतना डेवलप हुआ था. तो पुराने जहाजों में ये सेंसर्स बहुत जगह नहीं है. टेलीग्राफ है, मैनुअल टाइप है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ इनपुट आउटपुट है नहीं. सो हाउ डू वी डू इट? मतलब पुराने जहाजों में ये सेंसर लगाने पड़ेंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. पॉसिबल तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा. इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना सारा तोड़ फोड़ होएगा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. सो फॉर ओल्डर शिप्स कैरियज ऑफ VDR इज एग्जम्प्टेड. उन्होंने कहा कि आप VDR मत लगाओ, चलो कोई बात नहीं, आपकी जहाज पुरानी है, इतने सारे सेंसर इक्विपमेंट लगाना पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन VDR तो होना चाहिए, तो आप एक छोटा सिस्टम लगा लो जो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक डेटा, बेसिक डेटा तो रिकॉर्ड कर सके. सो
A VDR and SVDR is same in all respect, excepting for basically the two. Technically one, operationally two. What is that difference? That the SVDR is supposed to be receiving very few data. तो connections उसमें 2 3 4 होंगे, उससे ज्यादा के डेटा नहीं चाहिए. तो बहुत सारे पोर्ट्स की जरूरत नहीं है जिसमें हम कनेक्ट कर सकें इक्विपमेंट्स को, दूसरे सेंसर इक्विपमेंट. तो थोड़ा सा पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह कम हो जाते हैं. डेटा रिकॉर्डेड बाय एसवीडीआर इज लेस. सो एक तो ये हो गया. दूसरा ये कि लेस कॉम्प्लिकेशन इन द इक्विपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग कम हो गया, नंबर ऑफ पोर्ट्स कम हो गए, तो थोड़े पैसे भी कम लगते हैं. So it is little cheaper. That is the only difference. That it records less amount of data and it is comparatively cheaper than the VDR. Otherwise, everything is same. Same microphone, same VHF, same kind of recording. Only all the recordings are not there. Only 7 basic data is recorded by the SVDR. As we are already discussing, this limited amount of data will be available in older ships. So it is recommended for only older vessels. Which are the older vessels? ये पुराने vessels कौन है? So the ships built before 1st of July 2014. The ships, cargo ships, make a note, cargo ships only. Cargo ships built before 1st of July 2002 may be fitted with SVDR. If it is passenger vessel, there is no exemption. Only for cargo vessels, if the vessel is built before 1st of July 2002, they may be fitted with SVDR. What is the requirement for VDR? All passenger vessels, all tanker vessels of 300 GRT and above. So we'll go to the slide and we'll see the requirement of SVDR, carriage requirement, VDR and SVDR. Also, we will see what data is recorded by the SVDR. Basically, 7 data as we said, और additionally अगर कुछ और है तो record कर लीजिए. Limitation उससे ऊपर की नहीं है, नीचे की. The first one is date and time, number 1. Position coming from the GPS. Course over ground also coming from GPS. Speed over ground also coming from GPS. Heading of the ship coming from the gyro compass or magnetic compass. As it is, various repeaters are there, सब जगह जाता है, electronic data available है. So heading is coming from the gyro compass. Bridge audio, ब्रिज में रिकॉर्डिंग होती है, वो तो माइक्रोफोन इंस्टॉलेशन के साथ ही होते हैं. एसवीडीआर लगा तो उसके साथ आएगा ही. Then also VHF communication, which is an electronic device, can very well provide electronic feed to the VDR or SVDR. So what we saw: date, time, position, SOG, COG, bridge audio, then VHF audio, VHF communication, and additionally either AIS or radar, कोई एक का recording. So this 7 data is recorded by the VDR, SVDR, और additionally अगर कुछ और है तो record कर लीजिए. It is open now. कम से कम इतने तो होने चाहिए. So as we have seen, all these equipment are electronic equipment. GPS electronic, gyro compass already working on electronics.
radar, AIS, electronics. So electronics, electronic data available. So this is about SVDR. Let us see it on the screen. सर सर, अगर ये माइक्रोफोन SV नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्या? क्या चीज क्या चीज? माइक्रोफोन नहीं लगाएंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे तब भी वैलिड रहेगा क्या? मतलब बाकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो नेगेटिव माइक्रोफोन इज अ मस्ट. माइक्रोफोन इज अ मस्ट. जैसे मैंने कहा कि एसवीडीआर में इतनी चीजें मैंडेटरी हैं कि इतना तो रिकॉर्डिंग होएगा ही. जीपीएस की फीड होनी चाहिए, जैरो की फीड होनी चाहिए, माइक्रोफोन्स की फीड होनी चाहिए, बीएचएफ की फीड होनी चाहिए और एआईएस रडार की फीड होनी चाहिए. इतना मैंडेटरी है. थैंक यू सर, सर. ये SVDR का डेटा भी तीनों डिफरेंट FRM में सेव होता है? अगर आज की डेट में शिप बन रही है, देखो ये थोड़ा सा इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दिस रिक्वायरमेंट एसवीडीआर की रिक्वायरमेंट थी ऑन द ओल्डर वेसल्स 2002 से पहले जो बनी. आज कौन सी डेट है? 2021. कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 18-19 साल. आज 18-19 साल के बाद आज कोई वीडीआर लग रहा है, एसवीडीआर लग रहा है उस पुराने जहाज पे? क्या कहते हो? नो सर. नो सर. तो उतने पुराने जहाज पे आज इंस्टॉलेशन तो नहीं हो रही. लेकिन हाइपोथेटिकल अगर मान लें कि उतनी पुरानी जहाज है और आज लगा रहे हैं और आज लगाने में हम एसवीडीआर लगा रहे हैं, तो 3 तरीके के एफआरएम जरूर होने चाहिए. बिकॉज इट इज एज पर न्यू रेगुलेशंस. New regulation says that the data should be recorded in 3 places simultaneously: load free, fixed, and long term. Okay. Question answered? Yes sir, thank you. Okay. So let me open the file first. Sharing the screen. तो कल लास्ट स्क्रीन यही देखा था हमने, डेटा रिकॉर्डेड बाय द वीडीआर. So to verify your understanding, please take a look at this and see if you are happy. सारे क्वेश्चंस कंट्रोल में दिख रहे हैं आपको? Purpose, components, data storage requirement, the 3 types. Physical characteristics सर, ये of the file. डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट में वही आएगा ना 48 आवर्स का, जो फ्री का फ्री फ्लोट फ्री और फिक्स वाला है, और उसका दूसरे वाले का अराउंड 1 वीक का नहीं, 200 आवर्स. सब गड़बड़ कर रहे हो. 3 types of data to be recorded. I mean, data to be recorded on 3 types of recording medium. Load free minimum is 48 hours. On the fixed, minimum is 48 hours. And long term, 1 month, 30 days.
Repeat with me the 3 FRMs. Repeat. Yes, sir. Float free minimum 48 hours, fixed minimum 48 hours, and जो fixed hard disk है उसका 1 month 30 days. We will not use the word hard disk. We will use the other word. What is that? Long term. Long term. Very good. Yes, repeat the third type. Yes, the third type is long term. Long term recording medium. How much recorded data recorded? 30 days of data, sir. Or 720 hours. If you multiply 30 with 24 hours, you get 720. Physical characteristics of storage module क्या होना चाहिए? Remember, highly visible color, float free or fixed type. Sir, fireproof. क्या हुआ? Fireproof, sir. Fireproof, sir. Yes, Fixed fireproof. type must be robust. Must be robust, drop proof, shock proof, pressure proof if it is going down under the sea by 6 kilometers also. Data should be tamper proof. It should not be changed. Electrically proof, sir. Electrically tamper proof. Electronically नहीं, electronically. Electronically temperature Yes. proof data. नहीं, तुम कंफ्यूज कर रहे हो दो चीज को. इलेक्ट्रॉनिकली टेम्पर प्रूफ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली टेम्पर प्रूफ. I'm sorry, I understood temperature. So you are right. Electronically tamper proof. Very correct. Okay, so the SVDR, just a read through. अभी हमने डिस्कस किया. Just a read through. देखो कि सब ठीक ठाक है या नहीं. Same as the VDR, same 6 components. Installation requirements all the same. वैसा ही माइक्रोफोन लगेगी, इधर लगेगा, उधर लगेगा, ब्रिज में होगा, ब्रिज में होएगा. All similar. तो डिफरेंस क्या है? The data recorded by VDR and SVDR are different. So naturally, the question is, तो record करता क्या है ये? This is what is recorded by the SVDR. जब जीपीएस से आएगा तो स्पीड अगर होगी तो होगी, साथ में COG भी मिल सकता है. Because the GPS is always showing position, course and speed. All the three are shown on the screen of the GPS. So this data plus this bridge audio, VHF communications, either radar or AIS or both. इतना मैंडेटरी है रिकॉर्ड करना. उसके अलावे अगर कुछ और अवेलेबल है तो रिकॉर्ड कर लीजिए. जहां पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए. बट ऊपर के जितने जो थे, डेट टाइम, पोजीशन, कोर्स, स्पीड, ब्रिज ऑडियो, VHF and radar display or AIS, these are mandatory. Must record at least this much. We also said in the previous slide that it is meant for older vessels.
So where VDR is required and where SVDR can be placed. All passenger ships, ro-ro passenger ships, irrespective of size and date built, no exemptions provided. Every passenger vessel must be having VDR fitted. अगर नहीं है तो लगवाइए, फिट कीजिए, कोई exemption नहीं है उनको, because it is concerning with safety of life. तो वहां पे VDR will be fitted. VDR will also be fitted on cargo vessels where they are more than 3000 GT gross tonnage and which have been built after, on or after 1st of July 2002. 2002 के बाद जो भी शिप्स बनी हैं उसमें VDR लगेगा. So only these two requirement for VDR, all passenger vessels, cargo ships, इसमें टैंकर भी है, बल्क कैरियर भी है, कंटेनर भी है, all kind of cargo vessels of 3000 GT and above should be fitted with VDR. Remember the date. It is on or after 1st of July 2002. If the ship was built before this, then SVDR. So we have only option for cargo vessels. Passenger vessel में तो कोई exemption है ही नहीं. कभी भी बनाओ, पहले बनाओ, बाद में बनाओ. SVDR will be fitted on cargo vessels of 3000 GRT and above if they were built before 1st of July 2002. So this is the carriage requirement for VDR and SVDR. Of course, there was implementation plan कि जब ये होएगा तो कब और कैसे लगेगा. So VDR की requirement थी over the period of 3-4 years. The time schedule was given that certain class of vessel, certain type of vessel will be installing by such and such time, this type of vessel by such and such time. So we don't have to break our head too much on this. It is only implementation plan. So started off with 2006. Deadline provided 2009. So dry dock से लेके और deadline. Because this would require a lot of fitments and all that. So dry docking का date भी लिया गया है. Scheduled dry docking होती है ship की. So in that dry docking, all the fitments should be done. So deadline 2009, 2010. So henceforth, all this by 2010 must be fitted with the VDR. The requirement was laid down back in 2006 itself. जो हमने बात करी थी कि डेटा रिक्वायरमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा शुड बी एज पर सो एंड सो, जिसमें हमने एक्डिस भी देखा, इंक्लाइनोमीटर भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक भी देखी. तो वो सब चीजें तो बाद में आई हैं. एक्डिस तो था नहीं 2006 में. एक्डिस was implemented in a phased manner from 2012 to 2018. जैसे हम टाइम देते हैं हमेशा किसी रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए. तो 6 years were given for ECDIS implementation. So along with that, new requirement was floated for VDR. What data will be recorded? उसमें ECDIS भी include हो गया, electronic data भी हो गया, logbook हो गया, other things also got included.
So जो 20 items of data we have studied so far, recorded by the VDR, is as per the new requirement. So in the new requirement, few more things got added up. There were changes from the requirement of the older installations and the newer installations. So if the VDR was installed before 1st of July 2014, अगर इसके पहले इंस्टॉल किया गया है तो इसके लिए जो रूल्स IMO performance standards which were laid down, it was as per this, further amended by this A.861 within bracket 20. It was the original draft, original recommendation of fitting of the VDR. Later on, some amendments also came, which was MSA 214 within bracket 81. But if the installation is taking after this date, if it is installed after 1st of July 2014, then new requirements, what we have already studied. We discussed in the class all the data, egg days, electronic logbook, rolling motion, inclinometer, anemometer, etc., etc. Even the 3 types of FRM as per new requirement. 48 hours of recording time also as per new requirement. The older one said only 12 hours of data is recorded, is necessary. So for how much the data should be available, earlier it was 12 hours, now it is made 48 hours. Earlier, the final recording medium was either float free or fixed type. दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा, अब नहीं है, अब है 3 FRM लगने चाहिए. So there has been few amendments, few changes from the past requirement. All those amendments are mentioned in MSC 333 within bracket 90, and it was adopted in 2012. रिक्वायरमेंट आ गई, 2012 में हमने पेपर निकाल दिया और ये कहा कि जो भी इंस्टॉलेशन होगी आफ्टर 1st of July 2014, they will conform to the new requirements as given in MSC 333 within bracket 90. So in a major way, what are the differences between old and new installations? Are this, जो हमने बात किया अभी, पहले भी बात किया, now you are aware. So these are additional things or revised things. Final recording medium पहले भी होती थी, अब भी होती है. पहले की रिक्वायरमेंट एक की थी, फिक्स्ड और फ्लोट फ्री. अब कितने टाइप्स होने चाहिए? Of course, 3 types. Some features are also defined for each of them. फिक्स रिकॉर्डिंग मीडियम के लिए भी क्या फीचर होना चाहिए, फिक्स फ्लोट फ्री के लिए क्या, लॉन्ग टर्म के लिए क्या. सो द फीचर रिक्वायर्ड इज दिस. पहली वाली आपको पता है, 48 hours of data should be recorded. तीसरी वाली आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिकली टैम्पर प्रूफ होना चाहिए. What is getting added up here is the data retention. फाइनल रिकॉर्डिंग मीडियम में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है जब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसा कंडीशन होता है, तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई. बंद होने के बाद the data which is in the fixed type of recording medium
should be available for at least 2 years. बहुत बार आप पेन ड्राइव लगाते हैं, बोलता है corrupt, cannot read the data, it's not accessible. That should not happen with the FRM. अगर एक बार डेटा रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है तो मैं 2 साल के भीतर कभी भी एक्सेस करूं तो उसका मेमोरी में मुझको सारी रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि बोले कि डेटा नॉट रीडेबल, नॉट एक्सेसिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए. So it is clearly defined now that the recording should be available for reading for 2 years after the stoppage of recording. This is about fixed type. The float free also something similar. Again here records the data 48 hours, electronically tamper proof. But this data should be readable for at least 6 months. जहाज डूब गई, फ्लोट फ्री पॉपअप करके फ्लोट करने लगा, सर्च एंड रेस्क्यू पार्टी ने रिकवर किया, ओनर्स के पास पहुंच गया मॉड्यूल, मीटिंग्स हुई, ये हुआ वो हुआ, इन्वेस्टिगेशन की बात उठी, तो 4 महीने गुजर गए इसमें. तो सर्वेयर लेकर के बैठता है, जो इंस्पेक्टर है वो लेके बैठता है इस रिकॉर्डिंग को स्टडी करने के लिए. 4 महीने के बाद द डेटा शुड बी रीडेबल. मिनिमम 6 months तक के लिए विजिबल रीडेबल होना चाहिए. द ड्राइव शुड नॉट गेट corrupted or something. So that is the requirement of float free. Data retention 6 months. Fixed type data retention 2 years. Long term recording medium, it should record the data for 30 days or 720 hours. Electronically tamper proof तो होता है ये भी, but इसके साथ एक additional feature जुड़ा हुआ है कि it should be easily accessible to the crew. This one is meant for retrieval and taken by the ship staff into the lifeboat. If the time is permitting, they can pull this out and take it along with them, along with other things like pyrotechnics, certificates, blankets, वगैरह वगैरह जो चीजें लेके भागते हैं, सबकी रोस्टर में ड्यूटीज होती हैं, अबंडेंट शिप ड्यूटीज. साथ में एक ड्यूटी ये भी है, कलेक्ट वीडियो डेटा. आप सब लोगों ने रोस्टर देखा होगा, अबंडेंट शिप ड्यूटीज, उसमें वीडीआर का मेंशन देखा है आपने कभी? यस. यस सर. तो सोए सोए बोल रहे हो लगता है जी, नींद आ गई क्या? नो सर. हाँ, ठीक है, ओके. ऑडियो मॉड्यूल के लिए हमने बात कर लिया कि 3 चैनल, सॉरी 4 चैनल होने चाहिए. 2 चैनल ब्रिज के लिए, 1 चैनल ब्रिज विंग्स के लिए, 1 चैनल VHF के लिए. Just read through this slide and see if it is understood and it is okay. If not, ask me question. Okay. Oh yes sir. Okay. ओके, ऑडियो मॉड्यूल हो गया. VHF कम्युनिकेशन ऑन 4th चैनल, 2 ब्रिज के लिए, 1 ब्रिज विंग के लिए, 1 VHF के लिए. कल डिटेल में बात हुई थी इसके बारे में. One more difference which is there, earlier it said maybe 1 radar can be recorded, expand radar is recorded, it is good enough.
Now they say both the radar should be recorded. This is a clear-cut difference. That means both the radar should be running at all times. S-band radar is for long-range detection. X-band radar is for short-band detection, small target detection. सबके फीचर होते हैं. आरपा पढ़ोगे, सॉरी रडार का कोर्स करोगे आरओसी, तो उसमें ज्यादा क्लियर होएगा. एस बैंड की अपनी बेनिफिट है, एक्स बैंड की अपनी बेनिफिट है, तो दोनों रडार रखते हैं. Both radar should be recorded. AIS should also be recorded. EGDIS की display है, that should be recorded if it is being used as main navigation method. Rolling motion, inclinometer अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो. रिमेंबर कि ये सब सारी चीजें हम देख चुके हैं VDR के लिस्ट में, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. सिर्फ हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ये कि नए वाले रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आ गई हैं, क्या क्या चेंजेस आए. तो हमने FRM देखा, रेडार देखा, ऑडियो चैनल देखे वगैरह वगैरह. So EGDIS display and rolling motion. Finally, electronic logbook. This is also recorded. और एक लास्ट थी कॉन्फ़िगरेशन डेटा, तो उसको हम छोड़ रहे हैं. वहां भी मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे भी छोड़ रहे हैं. So here are some review questions for you. See if you are happy with this. Review questions. All clear? Feeling yourself good to answer all this? कोई जवाब नहीं दे रहा, सब सो गए क्या जी? नहीं सर, नहीं सर. नहीं सर, नहीं सर. नहीं तो सर. रिव्यू क्वेश्चंस आर ऑल ओके, आंसर कर सकते हैं अब? Yes, थोड़ा sir. बहुत पढ़ेंगे. Yes, sir. यस सर. Good. So with this, we are done with VDR. So if I may invite any questions that you may have to ask. Any questions? सर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा ना कि मतलब जैसे कि वीडीआर क्या क्या रिकॉर्ड करता है, तो उसमें वीडीआर का लिखना ना सारे पॉइंट्स, या एसवीडीआर के लिखने हो? ओके, मैंने आपको नोट्स भेजी हैं. Let us get familiar with the notes that I have sent to you. Open the question bank, जो मैंने आपको ईमेल में भेजा था. Please open the question bank. खोल लिया सर. Okay, just one second. उसमें चैप्टर निकालिए VDR का. VDR का चैप्टर निकालिए. मैं इधर कंप्यूटर खोल रहा हूँ, थोड़ा सा बैक जा रहा है मेरा, सॉरी. Okay, have you opened the document VDR? Yes. Question answer. Okay, so read the first question file. What are the solus requirement for VDR? What is its carriage requirement for carriage requirement? Okay. Answer. Please read the answer to the class.
SOLAS requirement for VDR. VDR are required to meet performance standards not inferior to those adopted by the organization. The VDR should be continuously maintained sequential records for pre-selected data items relating to status and output of the ship equipment and command and control of the ship. The VDR should be installed in a protective capsule that is brightly colored and fitted with an appropriate device to aid location. It should be entirely automatic in normal operation. Administration may exempt ships other than Ro-Ro passenger ships constructed before 1 July 2002 from being fitted with VDR where it can be demonstrated that interfacing a VDR with existing equipment on the ship is unreasonable and impracticable. The voice data recorder system, including all sensors, shall be subjected to an annual performance test. The test shall be conducted by approved testing service facility to verify accuracy, duration, and recoverability of the recorded data. In addition, test and inspection shall be conducted to determine the serviceability of all protective enclosures and device fitted to aid location. A copy of a certificate compliance is issued by the testing facility stating the date of compliance and applicable performance standard shall be retained on board the ship. Okay. So whatever you have been reading is the recommendation by IMO. So last requirement है ये VDR के बारे में कि एक VDR को क्या क्या करना है, किस जहाज पे लगेगा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. एनुअल परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसमें ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, ये सब दीज आर IMO की रिक्वायरमेंट है. Okay, sir. Understood? Yes. Whatever the requirements regarding VDR, IMO SOLAS requirement are these. अगला question. Okay, Gautam. Yes, sir. Second question. Please read the second question. Carriage requirement for VDR. Yes. Under regulation 20 of SOLAS chapter 5th of voyage data recorders VDR, the following ships are required to carry VDR. Passenger ships constructed on or after 1 July 2022 or Ro-Ro passenger ships constructed before 1 July 2022, not later than the first survey on or after 1 July 2002. Passenger ships other than Ro-Ro passenger ships constructed before 1 July 2002, not later than 1 July 2. ओके Yes, sir. गौतम, तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान देख रहे हैं कि अगर 2002 से पहले बने थे तो कब तक VDR लग जाना चाहिए, 2002 के बाद बनी है तो कब तक VDR लग जाना चाहिए. रोरो पैसेंजर वेसल्स की पहले बात करी, फिर पैसेंजर वेसल्स की बात करी, तो आप क्या देख रहे हैं कि पुराना हो नया हो दोनों में ही VDR लगेगा. देख रहे हैं? All right? Yes. All right. So now we understand VDR carriage requirements. Generally हमने क्लास में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी डिस्कस किया. Next question. असद जमाल. Yes, sir. Yes, please go ahead. Third question. VDR. A second, sir. The carriage Yes. requirement for SVDR. माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक करके बोलो. Sir, hold a second. हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही तो माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक कर लो. सर अभी आई क्लियर? अरे बहुत अच्छा, एकदम चकाचक आ गया. Carriage requirements for फिर SVDR. खराब हो गया थोड़ा सा. Sir, carriage requirements for SVDR. अच्छा वो छोड़ दो, अगला क्वेश्चन बात करो, अगला क्वेश्चन बात करो. ये तो हो गया, हमने बात कर ली. Sir, SVDR. Purpose of VDR. हाँ. A VDR or voice data recorder is an electronic instrument installed on a ship to continuously record critical information related to the operation of a vessel. It consists of recording system for a period of at least 48 hours, which is continuously overwritten by the latest data. The data is recorded on multiple stored devices with special attributes simultaneously. In case of any accident, incident, or even otherwise, this recording is recovered and made use for various purposes, especially or
for investigation in the events of accident. Yes. Purpose of VDR. VDR can be used for number one, accident investigations, various sensor data as well as communications helps in the recreating the scenario of the event. Number two, response assessment. Actions taken in an incident can later be reviewed to assess the response of the navigator. Number three, training support. Facts obtained from study review of any incident can be used as training material. Number four, promotion of best practices. Helps in promoting best practices in the bridge by the way of monitoring, continuous monitoring. Number five, reduction of insurance costs. VDR being a help in training, promoting best practices ultimately leads to reduction of insurance costs to companies. Good. So are we okay? What is a VDR? What is its purpose? Clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Next question. Divansh. Divansh. Yes, sir. Okay. Next question. हाँ जी, sir. VDR. Difference between VDR and SVDR. What are the data recorded by each? On Okay. 1st July Remember, 2006. one second. Yes. Remember, all these are questions which are asked in the examination. ये compilation है examination वाले question paper से. वहां की questions हमारा answer. So if you are preparing by this, you are preparing for the exam. Please go ahead. On 1st July 2006, amendments to Regulation 20 of SOLAS Chapter 5, Safety of Navigation, on carriage requirement for a shipborne simplified voyage data recorder (SVDR) was brought in force. SVDR is meant to be fitted on older आवाज SOLAS क्लियर नहीं cargo है. ships. माइक्रोफोन नजदीक करो. क्लास को सुनाई नहीं पड़ रहा. मुझको भी थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा. On 1st July 2006, amendments to Regulation 20 of SOLAS Chapter 5, Safety of Navigation, on carriage requirement for a shipborne simplified voyage data recorder (SVDR) was brought in force. SVDR is meant to be fitted on older SOLAS cargo ships. System setup wise, there is no difference between VDR and SVDR. Both comprise of the same components. However, VDR is a comprehensive recording system which collects and stores detailed data, while the SVDR is not required to store the same level of detailed data. As a standard VDR, SVDR should maintain a store in a secure and retrievable form of information concerning the position, movement, physical status, command, and control of a vessel over the period leading up to a following an incident. ठीक है. So उसमें basically position, course, speed और speech, command and control. Okay, port 10, port 20 ये सब जो हो रहा है, बात हो रही है ब्रिज में कंट्रोल करने के लिए, वो सब सारी चीजें कम से कम इतना रिकॉर्ड होना चाहिए. आगे प्लीज. Next question, sir. Okay, next question. Go ahead. What amendments have been made for SOLAS shipboard installation of VDR? Following. Okay, so we have just seen three types of FRM. Number one. Yes, sir. Audio module, 4 channels minimum. Recording of radar, both the radars. Recording of AIS. Recording of EGDIS. Recording of electronic logbook. Recording of configuration data. Then what else? Recording of rolling motion. Recording of नहीं बस इतना काफी है, मेरे ख्याल से इतना होगा. So these are the new requirement. उसमें FRM में 48 hours, 48 hours, 720 hours. So are we all good with VDR? Yes, sir. Now do Yes. we know where to look for an answer if we want an answer to a question? Where to look for it? कहाँ ढूंढेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Question mark. All right. So we will close the class today, but remain logged in. Another 10 minutes or so is remaining. 8-10 minutes is remaining. That you take it as self-study. Go through the topic. In the next class, we'll start
फ्रेश टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होने वाला है? कोर्स प्लान क्या कह रहा है? What is the course? Come again? Sir, EM log, electromagnetic. Very good. Okay, very good. So next class में we will talk about EM log. So VDR done. We have completed Banvas, AIS, LRIT, and VDR. Next EM log in the next class. Okay. So remain Okay, logged sir. in for another Okay, 10 sir. minutes. Self study mode में रहिए. Once you are completed, you can log off directly. When you see the time, you can log off directly. Okay. Thank Okay, you, Okay, sir. thank you, sir. Righto. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye, sir. Bye. thank you, sir. All right. Bye, sir. Bye. मैं भी लॉग्ड इन हूँ. I'm not signing off. Thank you, sir.